Hi people, I'm Animesh Bisen, a fourth year undergraduate at Thakur University, Patiala, and an upcoming analyst at one of the top consulting firms in this world. Today we have a seasoned entrepreneur whose first startup failed. His second startup didn't perform as per the expectations, but his third startup has more than 10 million app downloads on Play Store, and it's very likely that the last assignment which you submitted at your college was scanned using his application. I'm talking about Mr. Gaurav Shrishrimal, who is the co-founder of Kaagaz Scanner, and on this podcast he'll be sharing his journey of creating the Kaagaz Scanner. So let's go to the video. Welcome to my channel. It's a great honor to have you over here. Glad to be here, Animesh. Glad to be here. Yes, sir. So, sir, we are going to structure this podcast in three parts. The part one will be about your college life. Part two will be about Kaagaz Scanner, and part three will be about, in general about startups. So, sir, the first question about on this podcast is that how did you made it into IIT Kanpur? Was it a conscious choice? या फिर यू आर पार्ट ऑफ दैट इंडियन इकोसिस्टम जहाँ पे जो भी बच्चा 11th 12th में अच्छा होता है, साइंस में अच्छा होता है, he get pushed into engineering college? If I'll be honest here, Animesh, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज जो है या एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो हमेशा से था. आई गेस बचपन में भी आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ पजल्स. काफी मतलब वो क्रिएटिव चीजें करना बचपन से बहुत मजा आता था उसमें. एंड दैट इज व्हाट आई गेस माय पेरेंट्स सॉ. एंड लाइक एवरी अदर इंडियन किड, पेरेंट्स ने बोला ये करना है, ये करना है. शुरू में तो बोला जाता है ऑब्वियसली टिल 7th 8th 9th यू आर सेड कि यार ये कर लो, ये कर लो. बट इवेंचुअली 11th 12th माय पेरेंट्स गिव मी अ चॉइस कि भाई इंजीनियरिंग करना है आपको या कॉमर्स करना है आपको. एंड देन आई टुक कि इंजीनियरिंग में मजा आ रहा है, मतलब मजा आएगा, साइंस अच्छा लगता था मुझे. सो आई केप्ट ऑन परस्यूइंग एंड इट केप्ट ऑन हैपनिंग आई गेस. एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स वांटेड कि यार आईआईटी चला जा अगर जा सकता है. तो वो सबके पेरेंट्स है, आई विल बी ऑनेस्ट ऑन दैट. बट इट वाज नॉट दैट दे वुड वांट कि नहीं आईआईटी ही जाना है तेरे को, ऐसा नहीं था. दे वर लाइक आईआईटी एग्जाम दे, अच्छा लगता है जा, नहीं लगता है जो करना है कर. So that is what happened. I gave my first attempt, हुआ नहीं तब. Second attempt दिया, हो गया. First attempt में I got like 500-600 का extended merit list का rank आया. Second attempt में I got through. I took IIT Kanpur and went there. Great, sir. So अच्छा ही हुआ you didn't went into commerce because we wouldn't have Kaagaz then. ऐसा नहीं है यार, मतलब all my entire family is commerce. My dad, my brother, my Tauji's son, everyone's commerce, and they have built businesses. So my dad runs a factory today. उन्होंने बनाया है. It's not कि engineering कर सकता है. उन्होंने 2-3 फैक्ट्रियां बना ली अपनी लाइफ टाइम में. He had to shut down 2 also, so ups and downs are there. But he's a all in all commerce guy. MBA भी है, but commerce ही है उनका background. So yeah. Okay, sir. So, sir, the next question which I am going to ask you, I know the answer of this question, but still. So, sir, what kind of student you were in IITs? So, basically, I am also from a decent engineering college. I've seen 3 kinds of people. Number 1, who are just into studies and totally all into books. Number 2, who are just into extracurricular and they have somewhere around, 5 to 6 CGPA. And the third, who maintain the balance and who are into both. I was the third, I would say. क्योंकि I used to I was a integral part of the music club IIT Kanpur. I used to play in music club IIT Kanpur. Second, I was heavily involved in the cultural festival of IIT ke Antaragni. From second year, third year, fourth year, all 3 years I worked in Antaragni. And I maintained a okay CGPA in college. CP, yeah. So I maintained that CPI हम बोलते थे उसको. So I maintained an okayish one there. So third one I would say definitely. Okay, sir. So while I was researching, I got to know that you have done at least 40 music shows while being part of the music club at IIT Kanpur. So why don't you tell us something about your interest in music? And are you pursuing So interest in music has been since childhood, I guess. I used to learn हारमोनियम बजाना सीखा था सबसे पहले मैंने. Then I moved to keyboard. I tried
my hands on tabla as well, but नहीं हो पाया, मैं keyboard पे ही रहा, and I kept on playing. Then college में I saw an entirely different version. यहाँ पर घर में क्या होता है कि अच्छा अंकल आंटी को सुना दो बेटा, अंकल आंटी आए मिलने के लिए, नाच के दिखा दो. वही जैसे आप कोई डांस करता है तो बोलते हैं अच्छा डांस करके दिखाओ, अंकल आंटी को देखना है. तो समथिंग लाइक दैट वो बजाता था. कभी पापा कभी बोल दिए कि यार इसके शादी में थोड़ा सा बजाना है तो बजा लिए अपन. It was all that. It was never a band sort of what I played. But in college I saw कि band में कैसे बजाते हैं. How do you play, like perform? परफॉर्म करना कॉलेज में देखा, बजाना आता था, बट परफॉर्म करना कॉलेज में देखा, मैंने सीखा मैंने. So that is how it happened. Okay, sir. So, sir, do you still pursue that, your interest in music? I play melodica. It's a smaller version of a keyboard. You like blow into it and you play it. I play it. I put some videos on Instagram as well. So somewhat pursuing it, but not completely. जितना कॉलेज में करता था उतना obviously नहीं, but somewhat I do. I still play. Okay, sir. So, as you were speaking about Antaragni, the cultural fest of IIT Kanpur, I also know that you were the head of PR over there. So why don't you tell us something about, Antaragni, and how was your experience being the head? So, as I was very close to music always in Antaragni, first I became the coordinator for Junoon and Synchronicity. Those are basically the Eastern band and the rock band competitions over there. Okay. So I organized that, called up bands over there. We were a team of 4 to 5 coordinators with like 20-30 more juniors who would help us in organizing that particular event as a part of Antaragni, obviously. Then in my 4th year, when I was like, I tried to be a part of the Antaragni core team, and they took me in as head of PR and professional shows. Since I was so much related to music, I handled all the 4 nights, like 3 pro nights, basically. How the artist will come, who will come, साउंड कैसा होगा, कौन गाना बजाने वाला है, क्या गाना बजेगा, वो सब चीजें मेरे अंडर आती थी. And that is what I did as part of the Antaragni core team in 4th year. So we got Sonu Nigam, we got Indian Ocean as a part of that festival at that time. It's good to know about that, sir. And sir, now coming on to the 4th question, did you ever thought of being an entrepreneur while you were at college? No, I did not actually. I always had that in mind, यार कि अच्छी नौकरी करेंगे, 2 साल 3 साल नौकरी, आईवी लीग एमबीए हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब लगाएंगे और लाइफ चिल करेंगे. दैट इज व्हाट द यूजुअल थिंग वाज कि अच्छा कि मैकेंजी बीसीजी में जॉब लगवानी है अपनी, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और फिर सेट हो जाना है एकदम, मतलब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे 30 साल तक अपने पास. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. ना कुछ आए बाएं था, कुछ नहीं था उसका, बस एक वो दिमाग में बैठा लिया था कि एमबीए करते ही अमीर हो जाता है आदमी. ऐसा होता नहीं है दो. But that was the thought process in college. That took a dive after during my first job when I sort of started working as a founder, first job ke baad. But so yeah, that was my thought process then in college back then. Okay, so just one thing you said, McKinsey, BCG, let's just add Bain also into it because it's the company I'm going to work for in few months. So that's actually, I could not get into it. I really wanted to pursue consulting, but तब हो नहीं पाया था अपना consulting में. I got into finance. Okay. मैंने try किया, but तब companies आई भी नहीं, कुछ placement ले आई, कुछ नहीं आई, वो सब. So there are many technical issues in your placement always. अब हर कुछ हंकी डोरी होता नहीं है, मतलब you see ऐसा लगता है कि अच्छा IIT चले गए अब तो सब सेट है. हर जगह हर चीज की स्ट्रगल है. वहां पर भी 800 लोग लड़ रहे हैं एक जॉब के लिए, एक बैच के 800 people are there. It's not कि भाई सबकी नौकरी लगने वाली नहीं लगती. So it's not all hunky dory at the end. I wanted to work in consulting, but हुआ नहीं, तो पता ही नहीं consulting होती क्या अपने को. I never could know कि what is consulting actually. पता नहीं, future में you never know, कुछ भी हो सकता है. We'll see. So since you were talking about your corporate life, so I know that you have worked for a Switzerland-based investment banking firm for around 1.5 years. So आपका experience वहाँ पे कैसा था? I mean, what made you switch?
Superb experience, I would say. Why? Because my bosses were pretty good. Like they helped me at every stage. Hello, Yes, am I yes, sir. audible? Yes, sir. You're audible. You're audible. Okay. Yeah. So they helped me at every stage. Even at the time I wanted to resign, they were like supporting that this makes sense. So what I have always learned, Animesh, is that whatever you want to do, be transparent. Be clear with the person who you're reporting to or working with. Be clear. If you're not clear with them, then things won't work out like you want to. So at the time of resigning as well, I went to my super boss. I told him that boss, ये ऐसा सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये है वो है, and he was super supportive. My boss and my super boss, both of them, कि यार करो ये, it makes sense. So that is what happened. Otherwise, working at Credit Suisse was superb. Met some pretty good people there. A lot of them I'm still in touch with. We hang out, we talk, we meet, and obviously the corporate experience that was my basically first and last corporate experience. So I learned a lot about organizational structures, how teams work, how do you work as a team. So multiple things were there, and it was pretty helpful. Okay, sir. So though, I mean, you must have thought about 1,000 times while switching your career, but सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है कि इसके बाद नहीं यार, अब तो मुझे अपना कुछ खुद का कुछ करना है. So what was that point in your life? कि after that I mean, after which you felt कि यार अब तो खुद का कुछ करते हैं. Did you saw any problem? मतलब if I'll be honest कि वो हमको प्रॉब्लम दिख रहा था जब टैपनी स्टार्ट किया था हमने. मतलब I met स्नेहांशु थ्रू कॉमन कनेक्ट्स, एंड जब हमको वो समझ आया कि वो प्रॉब्लम है, बट सो स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड मच ऑफ अ थिंग, बिकॉज यू ऑलवेज फील कि यार, तो सी देयर आर थिंग्स लाइक कि अगर घर पे पैसे नहीं भेजने होते हैं तो थिंग्स गेट सिंपलर फॉर यू. इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, घर पे पैसे भेजने होते हैं तो थिंग्स डोंट गेट सिंपल. यू नीड टू वर्क. यू कांट टेक अ रिस्क, कहीं घर आपके पैसों से चलता है तो. मेरे साथ वो सिनेरियो था नहीं. मेरे को घर पैसे भेजने नहीं थे, मेरा घर चल रहा था इधर. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट क्रेडिट सुइस. सही लग रहा था. देन आई मेट स्नेहांशु एंड ही सेड कि ये आइडिया है और दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड इट ऑल स्टार्टेड लाइक बिल्डिंग अप इन फ्रंट ऑफ मी. एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि यार ये करके देखते हैं. एंड नाउ व्हाई इट वाज लाइक दैट फॉर मी, बिकॉज मैंने बचपन से घर पे ये देखा है कि यार नया धंधा स्टार्ट करके कैसे काम होता है. आई हैव सीन माय डैड डू इट. सो दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि यार ये करके देखते हैं इसको अपन. क्योंकि आई हैव सीन माय डैड एंड माय ताऊजी ग्रो फ्रॉम लाइक हियर टू हियर, back here. It's been a waving journey, but they are doing it still. So that was my trigger, I guess. My parents, I have seen how they have been, and that is the call I took. Okay, sir. And so while you were switching your career, was it tough for you to convince your parents? Or since they were already from a business background, it was comparatively... Yes, that helped. That was super helpful for me, that they knew the risks, the upside, the downside. So downside उन्होंने बोला यार ज्यादा क्या होगा, बंद हो जाएगी ना, फिर कुछ सोच लेंगे. और क्या मतलब वही चीज ना मैं बोल रहा हूँ, आपका घर आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है तो इट बिकम्स वेरी इजी. बट कहीं फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, देन यू नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स टू सॉर्ट दैट आउट कि भैया 1 साल का पैसा मैंने दे दिया है, अब मैं मेरा कुछ सोच रहा हूँ. सो वैसे सोचने में इट गेट्स इजियर, आई वुड से. Got it, sir. Sir, I was reading in an interview that, I mean, you started Kaagaz Scanner as a side project. And how does it feel when a side project gets 1 lakh downloads in just 24 hours? Sir, तब नहीं लगा था कि इसको mainstream करना चाहिए, अब तक side क्यों बनाया हुआ था? यार एक तो ना काफी पढ़ लियो आप हमारे बारे में. इतना मैंने सोचा नहीं था पढ़ोगे. So जैसे ही मतलब बैन हुआ, चाइनीज ऐप बैन हुआ, 2-3 लोगों ने हमारे बारे में ट्वीट किया, शेयर किया. एक तो पहले तो मैं बैठ के ना वो ट्वीट के लाइक का काउंटर देख रहा था. तो ऐसे बढ़े जा रहे 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 तक गया था वो लाइक्स.
ऐसे 2-3 लोगों ने ट्वीट किया था, एंड मतलब ट्विटर पे 20,000 लाइक आना मतलब आपकी रीच बहुत चली गई है। राइट। सो हमने नहीं किया था, किसी और ने किया था वो ट्वीट। देन फेसबुक पे भी किसी ने ऐसे शेयर किया, तो ये सब हुआ। ये शुरू के 4-5 घंटे में हो गया था। चाइनीज ऐप बैन हुआ था रात को 9-9:30 बजे उस दिन। 30 जून हम 2020। मैं देख रहा था यार, ये घूमे ही जा रहे, बहुत बढ़िया। फिर मैं जाके देखा, मैं यार डाउनलोड भी तो देख लें क्या चल रहा है। वो तो देखा ही नहीं, अपन तो ट्वीट में ही रह गए। फिर डाउनलोड देखा तो वो भी ऐसे। तो डाउनलोड क्या है ना, इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर। तो प्ले कंसोल जो जो गूगल कंसोल है, वो आपको डाउनलोड बहुत देर बाद बताता है। तो हम दूसरे तरीके से जाके देख रहे थे, फायरबेस भी टूल होता है, उस पे जाके देख रहे थे यार कि है क्या, मतलब लास्ट 30 मिनट में कितने यूजर आ गए। वो देखा तो बढ़ते ही जा रहा है, लास्ट 30 मिनट में 10,000 15,000। मतलब चल क्या रहा है ये, हो क्या गया अचानक से। एंड देन आई थॉट कि बॉस दिस इज द टाइम। 11 बजे क्लिक किया मेरे को कि यार नाउ दिस इज द टाइम। अब तो पूरी 5 साल में जो सीखा है सब लगा देना है, और कोई चारा नहीं है। मेक और ब्रेक है आज। कहीं नेक्स्ट 2-3 दिन में हमने नहीं पेला अच्छे से तो भाई दिक्कत हो जाएगी बाद में से। क्योंकि वैसे ही सॉर्टेड ऐप उतना अच्छा पिक तो कर नहीं रहा था हमारा एज वी वांटेड इट टू। सो वी वर लाइक बॉस, ये तो मतलब पूरा 5 साल में जितना मार्केटिंग मैंने सीखा था 2 रात में लगा दी थी मैंने वो। एंड दोस 10 नाइट्स वर लाइक 3 घंटा सोते थे हम तीनों फाउंडर, 3 से 4 घंटा। 2 बजे सोते थे, 6 बजे उठ जाते थे। वैसे ही चलता था, मतलब अपडेट पे अपडेट जा रहा है आपका, कुछ भी चल रहा था। मेल बॉक्स में 3,000 ईमेल पड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा किसको रिप्लाई करूं, क्या ना करूं। सो प्रिटी गुड फीलिंग। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि आई हैड दैट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ मी। वो नहीं होता तो शायद पता नहीं मैं क्रैक कर पाता, नहीं कर पाते हम तीनों के पास। और वो साथ में काम करना, मतलब बहुत लड़ाई हुई है यार वो 10 दिन में। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि टेक क्यों नहीं शिफ्ट कर पा रहा है, और टेक मेरे को बोल रहा है कि तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी रेटिंग क्यों गिर रही है, रेटिंग बढ़वाओ। मैं बोला ऐसे कैसे बढ़वाऊं, टेक प्रोडक्ट बनाओ। तो मल्टीपल थिंग्स, सो वी कुड डू दैट बिकॉज वी न्यू ईच अदर। कहीं वही हम नए फाउंडर्स होते तो बहुत लड़ाई हो जाती, पता चला कुछ और ही हो जाता था। लेकिन यहाँ तो ये था कि वी वर लाइक ठीक है, कर लेंगे, कुछ ना हमको ही करना है एंड में। तो क्या होता है ना कि को-फाउंडर्स में मतलब ये फीलिंग आ जाती कभी कभी कि यार तो मेरा प्रोडक्ट है, कैसे कर रहा है। लेकिन यू डोंट रियलाइज कि तीनों का इक्वल है, एंड ही इज एज मच इनटू द प्रोडक्ट एज यू आर। लेकिन आप तब ज्यादा जोश में हो तो समझ नहीं आता आपको, आप जोश में होश को बैठते हो। सो ओनली एक्सपीरियंस कैन टीच यू दैट, आई गेस, कि रिमेन काम, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, and you will get far. Don't get ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, excite हो, yeah. Yes, sir. So also, I mean, people have a common conception कि when a company get funded, I mean, you get liberty to do whatever you want to do. But what people don't understand is that it also adds a lot of responsibility onto your shoulders. So do you have anything, I mean, which can, you know, which reflects the same, that how much responsibility it adds? So responsibility in the sense that you need to count your investor as one more as another founder. He is sort of a co-founder with 15-20% in the company. He's similar at your equity levels. मतलब if you are 2-3 founders, if you have an investor with 15-20%, you're at similar levels. So just आप वैसे सोचो कि आप एक co-founder ले रहे हो कंपनी में. That is what an investor is. But that co-founder is coming with money instead of work. He will add money to the system. He will add his ideas to the system, but he won't work. काम आप करोगे सारा, आपको वैसे सोचना होगा. एंड आप उसको इक्विटी दे रहे हो, दैट इज लाइक योर इक्विटी. अब जैसे हमने डाइल्यूट किया तो हमने इक्वली इक्विटी दी इन्वेस्टर को, राइट? सो दैट इज व्हाट यू गिव टू द इन्वेस्टर, योर हार्ड अर्न्ड इक्विटी. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि भाई ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम. इट्स नॉट कि यार सिर्फ पैसे आ रहे हैं दे देंगे वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीम है. वो आपको हर अपडेट उसको देना है, कैसे ग्रो कर रहे हो, क्या कर रहे हो. सो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अप. एंड ऐसा नहीं होता कि पूरा पैसा आपके कंट्रोल में आ गया. वो पैसे का भी आपको हिसाब देना पड़ता है हर कुछ दिन कि ये ऐसा वो ऐसा. सो या तो सर आपको कैसा लगा था when you got to know that your app is being featured as one of those apps which were in the Atma Bharat campaign?
AatmaNirbhar Bharat. Sorry, I cannot Right. take the So name right. no problem. So it was like पहले तो हमने सबमिट कर दी डिटेल्स वगैरह, डिटेल सबमिट करनी थी. Right. देन वी वर लाइक कि एक क्वालिफाई कर गए आप लोग, प्रेजेंट करना है एक दिन जाकर. तो हमने प्रेजेंट भी कर दिया. मतलब ऑनेस्टली वैसा था कि कुछ तो मन में उम्मीद थी कि कुछ तो होगा, क्योंकि ट्रैक्शन वैक्शन अच्छा आ गया था, हमको यूजर्स वर लाइकिंग आवर ऐप. सो दैट इज व्हेन वी थॉट कि यार कुछ तो पॉजिटिव जाना चाहिए इसमें. एंड लकीली वी गॉट फीचर्ड. सो दैट वाज लाइक प्रीटी गुड. मतलब उसमें ये होता है अनिमेश कि नाउ आपके कंपनी के बैनर या लोगो के साथ गवर्नमेंट का लोगो, Right. दैट वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं है आज के दिन में वो, बट हमारे पास वो है. सो दैट ऑब्वियसली गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राउड फीलिंग एंड एवरीथिंग कि भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है अभी. एंड इट बेसिकली adds up to the excitement, adds up to whatever you're building. So yeah. Okay, sir. So whenever we talk about a startup, so there are two parameters. एक तो नंबर होता है कि एक नंबर देख के हम लोग बताएं whether a startup is successful or not, or whether it is going as planned or not. And the second one is this. I mean, some of your senior or someone close to you वो आके कह दे कि यार नहीं आपका startup मैंने भी use किया. Now I really feel like it is very good. Maybe he or she can be your mentor or someone of that stature. So who was Right. that person to you? So for us, if I'll be honest, our investors have been pretty helpful. So for example, Fareed from ShareChat is our investor. He's also a batchmate, a dear friend, also an investor at Kaagaz, Fareed Hassan, and from ShareChat. So, and Farooq from Find is an app as well. So they have been super supportive of us as founders. They know the struggle, they know everything. Plus, so they have been our initial investors and supporters. In addition to the investors, we have now funds. We have Axelor, Pravega, First Check, Better. So they have also been like there for us whenever we need them. कि भाई अच्छा ये अब क्या करूँ मैं? So we reach out to them कि यार भाई ये issue आ रहा है, now help us out. And they help us on whatever front is possible for each of them. But yes. Now, sir, I would like to switch on to Indian startup ecosystem in general. Right now, India have 82 unicorns, and 42 of them were created last year, 2021. And in a recent interview, Piyush Goyal, the Commerce Minister of India, said that India should nurture at least 75 unicorns in this year, 22. So what do you think? I mean, what do you think on this? Currently, does Indian startup and Indian ecosystem have all those facilities which it takes to generate or create 75 unicorns in a year? I think so, yes. It can. Definitely, yes. Like, why? Because स्टार्टअप की कमी नहीं है यार इंडिया में स्टार्टअप की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में बस अभी कैपिटल की कमी है जो आ रहा है अब. तो जैसे जैसे कैपिटल आता जाएगा यूनिकॉर्न बनते जाएंगे. दो आई एम ओके यूनिकॉर्न हो नहीं हो, बट वो बिजनेस से स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए इवेंचुअली. अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस नहीं बनेगा तो यूनिकॉर्न का टाइटल का कोई मतलब नहीं है, टैग का. यूनिकॉर्न का टैग लेकर आप 1 साल 2 साल बहुत मचा सकते हो लाइफ में, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाओगे वो है. जैसे आप देख लो जीरोधा इज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, मतलब इंसेनली स्ट्रॉन्ग बिजनेस. जो उनके पास आज के दिन में द रिटर्न्स दे आर जनरेटिंग इज इंसेन. यू लुक एट शेयरचैट विल बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेसेस ऑफ इंडिया. व्हाई? बिकॉज कोई सोशल मीडिया है नहीं इंडिया में. फेसबुक एंड देन शेयरचैट, देयर आर जस्ट 2 सोशल मीडियाज. सो they will become one of the strongest businesses. Lenskart is superb. Like पूरी दुनिया को चश्मा पहनाएगा वो आदमी. I'm pretty sure those founders will kill it eventually. मतलब कि these are some of the strong businesses that I personally know of, and I'm very sure कि इंडिया से मतलब 75 क्या 100 भी निकल सकते हैं. You never know if the funding doesn't dry up from US or from external countries, तो निकल सकता है. बट वही है कि we need that funding इंडियन एंटिटी से कम है थोड़ी. So we need external support from this, external investors who would help Indian ecosystem grow.
What do you think was the major reason behind the push? 21 में 42 मतलब 42 यूनिकॉर्न्स निकल के आ गए, बाकी अब तक इंडिया में बस 21 से पहले मतलब 2021 से पहले 40 यूनिकॉर्न्स थे। तो एक साल में अब तक जितना इंडिया की हिस्ट्री उतने यूनिकॉर्न या उससे ज्यादा यूनिकॉर्न किस निकल के आ गए? वैसा आप वैसे नहीं देख सकते हो इसको। आपको ये देखना है इंडिया में स्टार्टअप बूम कब चालू हुआ, 2016-17, 4 years 5 years from then, that is where you get the unicorns. So you need to see it like that. You can't see कि 2021 में यूनिकॉर्न आए, वो 2021 में नहीं बने, वो 2016 से बन रहे हैं, 2017 2015 से बन रहे हैं, 13 से बन रहे हैं, तब से बनते बनते पहुंचे हैं ये अभी। मतलब इट वाज नॉट कि 2021 का स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया, वैसा नहीं हुआ कहीं भी। एटलीस्ट 3 से 4 साल लगा है लोगों को। सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि स्टार्टअप बूम इंडिया में कब आया। स्टार्टअप बूम इंडिया में 2015 के बाद आया। 2015 के बाद 4 से 5 साल में कंपनीज ने ये स्टैचर किया है अटेन, जो पहले भी 4 से 5 साल में किया है लोगों ने। तो आप वैसे सोचेंगे तो वैसे सोचिए इसको। अब 2016 में अच्छे स्टार्टअप्स थे, 15 में अच्छे स्टार्टअप्स थे, 17 में अच्छे थे, 18 19, तो अब आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। जो तब एक वो मुहिम चालू हुई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और एवरीवन बिल्डिंग टुवर्ड्स इट, नाउ यू विल सी द रिजल्ट, क्योंकि इट टेक्स 5 years, 7 years, 8 years, 10 years to build such a big business. So we dilute the term by saying unicorn, but these are companies worth 7,000 crores plus. That's a huge value. मतलब आप एक यूनिकॉर्न बोलते हो, अच्छा $1 billion. It's 1 billion is 7,500 crore. It's not a small money. It's not small amount. वो $1 billion बोलते ही लगता है कि हाँ एक एंटिटी है, कुछ तो है। लेकिन आप उसको जैसे इंडियन टर्म्स में देखो तो मतलब 7,000 करोड़ फ्लिपकार्ट को बेचा गया था कितना, 1.5 लाख करोड़ में। मतलब यार those are big amounts for Indian ecosystem, for entrepreneurs like us, like you, like me. Those are numbers. Building businesses of that stature, it's super. And I hope इस साल 100 निकले, so hopefully we'll see something good. Basically to summarize, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, since the revision of FDI norms in India and the startup boom has eventually grown, and now we are seeing such startups, I mean such unicorns. Okay, so now coming on to a hard question, hard as in from my perspective. So if we talk about competition, we see it from two perspectives, or we can divide them into two. The one is कि आप competition को एकदम मत देखो, because those are the traps क्योंकि जिसके बाहर आप देख नहीं पाओगे, you will confine them yourself into. And then also because आपकी innovation वहीं तक मतलब benchmark set हो जाता है कि वो competition है उससे थोड़ा भी अच्छा कर ले तो हम लोग उससे better हो गए. And the second one is कि आपको लगे कि मतलब competition is good. The second, in the first scenario, competition was not that good because it was limiting your innovation capability. But in the second case, अगर consumer के perspective से देखें, मेरे perspective से देखें, so it is better because I'm getting more choices at a better price and a better quality. So what is your thought in this? आपको क्या लगता है? Is the real world amalgamation of both these scenarios? Yes, it is. So why I'll say we have a lot of competition. We have competition from Adobe, Microsoft, Document Scanner एक Indian app है. Obviously Cam Scanner के जो rip-offs हैं उनसे भी है, Cam Scanner से भी है, because people can download that. What we think is that, see, our user base wants XYZ things and we are building it for them. But at the same time, keep a check on the numbers of your competitions. कि भाई आपका कंपटीशन कहीं लास्ट मंथ 1 मिलियन डाउनलोड मार रहा है, देन यू शुड बी कंपेरेबल कि भाई मैं 7 लाख डाउनलोड तो मैं मार रहा हूँ एटलीस्ट, या 3 लाख डाउनलोड तो मैं मार रहा हूँ, दैट यू आर एट सम कंपैरिजन टू देम, देन ओनली इट्स अ कंपटीशन टू यू. नहीं तो आप और उसका लेवल, अब समझ लो वो 1 मिलियन मार रहा है, आप 5,000 मार रहे हो, तो कोई कंपटीशन नहीं है आपके लिए. आपके लिए वो एक एग्जिस्ट करता है, बड़ा प्लेयर है मार्केट में, एंड यू स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द बॉटम. So you need to think it from that perspective, that what we see is कि भाई जो हमारे आसपास है वो हमारा कंपटीशन है. अब मैं जाके मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि फेसबुक मेरा कंपटीशन है. फेसबुक के भाई बहुत आते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ फेसबुक के सामने आज के दिन में. So आपको वैसे सोचना पड़ेगा कभी भी उसको कि आपका कंपटीशन मतलब वही है, वैसे देखिए आप उसको. And always keep a track on the numbers of your competition so that you are on your toes.
प्रोडक्ट तो आप अपने यूजर के लिए बना रहे हो, सो यूजर को जो चाहिए वैसे बनाइए आप, बट ट्रैक रखिए कंपटीशन के नंबर्स का. सो लाइक टेक both ways. What do you think? Like amalgamation of both the things should be there to run a healthy company. Okay, sir. Also, sir, if we talk about any industry, what do you think is the advantage of being the first mover? And there are certain advantages of being the last mover. What do you think are the advantages of both these things? So first mover के advantages भी है, disadvantages भी हैं. Advantage ये होता है कि किसी को पता ही नहीं उस बारे में कुछ. Right. So you are like the first one giving that service or giving that thing. Disadvantage उसका ये है कि आपको नहीं पता है कि क्या बनाया. मतलब आप रुक जाते हो, यार आपको सोचना पड़ता है और ज्यादा आपको R&D में खर्चा करना पड़ता है कि भाई मैं ये बना दूंगा कि वो बना दूंगा. सो डिसएडवांटेज भी होता है. लास्ट मूवर का फायदा ये है कि एक सेट प्रोडक्ट तो पता है कि यार ये तो चल ही जाता है, मैं ये भी इसका इसमें ये वाली, सो फॉर एन इंस्टेंस ये वाला स्टार्टअप आइडिया तो चलेगा ही चलेगा, ये पता है आपको, आइडिया तो चलेगा ही चलेगा, अब मैं उसमें इसका तड़का और लगा देता हूँ, इट विल बी मच बेटर देन. सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ द लास्ट मूवर. एंड जो लॉस है बीइंग लास्ट मूवर का, वो ये है कि पीपल ऑलरेडी हैव ऑप्शन, दे नो अबाउट ऑप्शंस, सो आपके लिए वो डिसएडवांटेज हो जाता है. In our particular case, it is a combination, I would say. Why we consider हम first mover भी हैं और last mover भी हैं एक तरीके से. Why? Because first mover इसलिए है क्योंकि जिस user base के लिए हम बना रहे हैं product, उनके हाथ में मोबाइल लास्ट 3 साल में आया है, जो अभी आ रहा है. The Geo revolution is getting mobile in their hands. So that is why we are a first mover, क्योंकि उन्होंने आज तक tools use ही नहीं किए ये सब. They are very new, so we know कि यार उनके लिए क्या बनाना है, कैसे बनाना है, we are understanding from them. और last mover इस सेंस में है कि एक अच्छा तगड़ा जो प्रोडक्ट है एग्जिस्ट करता है, that's Cam Scanner. If I'll say Cam Scanner is a super product, उससे अच्छा PDF क्वालिटी कोई नहीं दे सकता आपको. उसके जो इश्यूज हैं वो हैं कि भाई जो उसके डेटा कंसर्न्स हैं, they are already there, they are public, but जो क्वालिटी ऑफ द PDF है, no one can give you better than Cam Scanner. That is what we aim for. भैया next 3 महीना में मेरे को वैसा क्वालिटी चाहिए. So that is a combination of both what we are doing. The first mover for our users and a late mover considering the products already in the global market. So if you can merge that two and give an amazing experience to the users, that is what will count you in for a long ride. So yeah. Got it. So sir, now moving towards the end, I would like to give you the platform to give any advice for the upcoming entrepreneurs, the upcoming founders. So my only advice would be keep building, keep hustling, don't get demotivated. There'll be many things to demotivate you. There'll be your family, friends, family people, your friends. Many people will try to demotivate you. It's okay. Stay in the game. There are many highs and lows. So stay in the game. Keep hustling. Keep working. Keep your head down and keep working. If you think a lot कि भाई ये क्या होगा वो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी. So काम करते रहो बस. That is my one advice. Second, don't do startup just because your friend is doing a startup. That's the worst mistake to ever make. कि भाई मेरा दोस्त बन कर रहा है, यूनिकॉर्न बन गया वो, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. This is not the way. यूनिकॉर्न बन के भी उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है. Struggles don't end. Struggles will be there always, either personal या प्रोफेशनल या कुछ और. स्ट्रगल हमेशा रहेगा. आपको आपका बैटल चूज करना है कि भैया ये स्ट्रगल मैं लड़ सकता हूँ, ये स्ट्रगल मैं नहीं लड़ सकता. So don't do it for the peer pressure. Do it because you want to solve a problem, not because वो दोस्त स्टार्टअप कर रहे हैं. So those are my 2 proper advices. Third major advice here would be always maintain a good transparent record. Don't वो planning, plotting ये सब startup में नहीं चलता है. मतलब if you want to build a big company, if you want to run, ठीक है थोड़ा टाइम चलाना है, थोड़ा टाइम कुछ करना है तो अलग बात है. But if you want to build a big, strong, with a good foundation company, keep it transparent. At least with your co-founders, at least with your team members, be transparent with them, with your users. ये ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी चाहिए कि भाई एटलीस्ट co-founders में तो आपको सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो. There should not be any planning, plotting and all whatever.
So those three are my top advices. Specific तो और जाओ तो बहुत सीखा है, but those three are my top advices for all. Thank you, sir. Thank you so much for coming on to my podcast. It was a great pleasure to host you here. Thank you.